अभिवादयेऽहं संजय दत्त सति अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ वार्ताः। गतरात्रौ जम्मूकाश्मीरस्य शेपिया जनपदे आरक्षिस्थासने आतङ्कवादिभिः गोलिका प्रहृता। अनेन एको आरक्षिभटः वीरत्वं गतः, एकश्च व्रणितः। आरक्षाधिकारिणा प्रोक्तं यत् आक्रमणमिदं रात्रौ 8:30 वादने प्रारब्धम्। अत्रोन्तरं तत्र आतङ्किनाम् अन्वेषणाभियानं प्रचलितम्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन उक्तं यत् 18-द्विसहस्र वर्षं यावत् भारत पाकिस्तान सीमा पूर्णतया पिहिता भविष्यति। जैसलमेरे पाकिस्तान सीमा संपृक्त राज्योपवेशने राजनाथ सिंहः अवोचत् यत् एतदर्थं समयबद्ध कार्ययोजना विनिर्मिता अस्ति। अस्मिन् उपवेशने राजस्थानस्य मुख्यमंत्री, पाकिस्तानस्य उपमुख्यमंत्री, गुजरातस्य गृहमंत्री, जम्मूकाश्मीरस्य मुख्य सचिवः, सीमा सुरक्षाबलस्य वरिष्ठाधिकारिणश्च समुपस्थिताः अवर्तन्त। केन्द्रीयो गृहमन्त्रिणः राजनाथ सिंहः अद्य राजस्थानयात्रावधौ बाडमेर जनपदस्य मुनावां गमिष्यति। गृहमन्त्री पश्चिमी सीमा सुरक्षाबलेन उक्तं वीरभटैः सह मेलनम् अपि च माध्याह्नभोजनं करिष्यति। राजस्थानप्रदेशस्य गृहमन्त्री गुलाबचंद कटारिया अपि तेन सह भविष्यति। बीसीसीआई इति भारतीय क्रिकेट नियंत्रण परिषद लोढ़ा समित्योर्मध्ये साम्प्रतमपि विवादः विद्यते। उच्चतमन्यायालयेन साम्प्रतं कठोर्याचरणं कुर्वता लोढ़ा समितेः कार्याचरणम् अवरोधापरेपेषु भारतीय क्रिकेट नियन्त्रणाभिकरणस्य अध्यक्षः अनुराग ठाकुरः पदाधिकारी रत्नाकर शेट्टिभ्यां निजी स्पष्टीकरणपत्रम् अभियाचितम्। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेसदलम् आक्षिप्तवान्। तेनोक्तं यत् कांग्रेसदले राहुलस्य भक्ति देशभक्ति उत्कृष्टताम् आपादयति। कांग्रेसदलस्य वार्ताहर सम्मेलनं निर्लज्जतायाः पराकाष्ठा विद्यते। जल संसाधन मंत्रालयस्य एकोच्चस्तरीय दलं कावेरी नद्याः यात्रां प्रतिष्ठते। केन्द्रीय जल आयोगस्य अध्यक्षस्य नेतृत्वे दलेन राज्यकार्यैः सह चर्चा क्रियते। उच्चतम न्यायालयस्य निर्देशे गठित विशेषज्ञ दलं वास्तविक स्थिते आकलनाय यात्रां प्रकुरुते। अतोऽनन्तरं उच्चतम न्यायालये स्वीय प्रतिवेदनं प्रस्तौष्यति। बिहारस्य राष्ट्रीय जनता दलस्य राजवल्लभ यादवाय उच्चतम न्यायालयेन समनपत्रं प्रेषितम्। नाबालिकेन सह बलात्कारोपे बिहार प्रशासनेन पटना उच्च न्यायालयस्य प्रतिभूति निर्णयः उच्चतम न्यायालये वादश्रवणाय पञ्जीकारितः। अस्मिन् प्रकरणे आगामि वादश्रवणम् अस्य मासस्य 17 दिनाङ्के भविष्यति। तलाकत्र इति वैवाहिक संबंध विच्छेद व्यवस्थां विरुद्ध केंद्र प्रशासनेन उक्तं यत् महिला पुरुषयोः समानता विरोधी कापि परंपरा या महिलान् सामाजिक आर्थिक भावनात्मक रूपेण निर्बलीकरोति प्रशासनेन तस्याः प्रतिषेधः क्रियते। अपि च अस्मिन् प्रकरणे मुस्लिम महिलानां याचिकासु न्यायालये वादश्रवणं प्रचलति। गतदिने सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू गोवायाः मुख्यमन्त्रिणा लक्ष्मीकान्त पारसेकरेण सह उपवेशनं विधाय ऐषमः अन्ताराष्ट्रीय चलच्चित्र महोत्सवायोजनस्य समीक्षां कृतवान्। समयेव श्री नायडूना पौरविकासस्य विभिन्न योजनानां प्रगतिः समीक्षिता। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठौर प्रावोचत् यत् सोशल मीडिया इति सामाजिक संचारः जवीयस्या गत्या समेधते, अतो कस्यापि समस्याः दुष्करं वर्तते। दिल्ल्याम् इंडिया कनेक्टेड इति सामाजिक संचार विषयक पुस्तकस्य विमोचनावसरे तेनोक्तं यत् केन्द्र प्रशासनेन सामाजिक संचार माध्यमानां प्रभावः स्वीकृतः। अनेनैव प्रशासनस्य समेऽपि प्रमुख मन्त्रालयाः संचारमाध्यमैः सह सम्पृक्ताः सन्ति। दूरदर्शन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयोर्मध्ये ह्यः नवदिल्ल्यां सन्धिरेखा हस्ताक्षरितः। सन्धिरें दूरदर्शनस्य ज्ञान दर्शन शैक्षिक वाहिन्याः विषये अभवत्। अस्मिन् अवसरे दूरदर्शनस्य महानिर्देशिका सुप्रिया साहू समुपस्थिता अवर्तत। भारतीय वायुसेनायाः अद्य 84तमः स्थापना दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने 32-1990 वर्षे विधायिका द्वारा भारतीय वायुसेना विधेयकम् अभ्युपगमनानन्तरं वायुसेना अस्तित्वं प्राप्ता। राष्ट्रपतिः प्रणब मुखर्जी अद्य पश्चिम बंगालस्य मुर्शिदाबाद जनपदे नूतन सैन्य स्थासनस्य उद्घाटनं करिष्यति। इदं हि प्राकृतिक विशेषता समेत्य अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रशासनिक सौविध्ययुतम् आदर्श सैन्य केन्द्रं भविष्यति। अपि च सैन्य केन्द्रस्य विकासः क्षेत्रस्य सामाजिक आर्थिकोन्नतौ महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। पश्चिम बंगाले दुर्गा पूजायाः प्रारम्भानन्तरं तत्रत्य जनेषु भूरि उत्साहो दृश्यते। 5 दिवसीय दुर्गा पूजा विजयादशमीं यावत् प्रचलिष्यति। जनाभिमतं वर्तते यत् दुर्गा पूजा सामाजिक समारोहे खुशादान प्रदानोत्सवः विद्यते। डीडी न्यूज़ दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यत् वार्तावली इति संस्कृत साप्ताहिक
कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:00 भविष्यति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीयमाध्याह्ने 12:30 भविता। उदेति सूर्यः सर्वेभ्यः ददाति प्राणान् जीवेभ्यः सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः चिदाकाश महाकाश वासं भजे हम ओम नमः शिवाय। चतुर नार करके सिंगार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात हम मरत जात अरे वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।